on farmer and agriculture techniques which the farmers used during the olden times earlier, and the techniques they are using now. That is, the olden technique of agriculture has been switched over to the modern agricultural techniques. So, who is a farmer? Let us know about it first. A farmer, also called as an agricultural, जो खेती करता है, is a person engaged in agriculture, raising living organisms for food or raw materials. Then the term usually applies to people who do some combination of raising field crops. ऑर्चार्ड्स मतलब जैसे फूलों का बागान बागान होता है ना, फलों का बागान वगैरह, दैट इज ऑर्चार्ड्स. नॉट ओनली आपका गेहूं चावल ऑल दिस थिंग्स, इवन दिस फार्मिंग कैन बी ऑफ ऑर्चार्ड्स ऑल्सो. ऑर्चार्ड मीन्स आई टोल्ड नो, जो फलों का बागान होता है. देन वाइन यार्ड्स, हाँ हाँ हाँ, पोल्ट्री, देन लाइफ स्टॉक. पोल्ट्री मतलब जैसे मुर्गी पाल लिया, कुछ हनी भी पाल लिया, उससे शहद निकाल लिया, and other kind of animals को rear किया, breed किया, उससे फायदा लिया. All these actually categorized as farmers. A farmer might have the own farmland. एक किसान का अपना खुद का भी जमीन हो सकता है, या फिर वो दूसरे के जमीन में भी अगर खुद का जब, if the farmer is not having his own land, he may work as a laborer in others land also. And so, however, in the not so distant past, a farmer was a person who promotes or improves the growth of plant while labor and attention, land or crop, or raises animals. So, farming is not only that agriculture. Agriculture can be it can be raising of crops, or can be raising of animals also. Animals ka rearing, breeding, keeping, and making benefit out of them. All these are categorized as, all these people, those who do all this, they are farmers. Okay. And in India, see, India is an agricultural country. Okay, the Indian farmer is a living idol of India. They are the most hardworking people in India, because they work hard day and night. Sometimes they work hard completely for 6 months to 8 months to 9 months to grow a single crop. जैसे अपने बच्चों की तरह crops का grow करते हैं. And India is called the land of farmers. Now आप लोग के बुक में ये दिया है एक report. As per the report of a newspaper, the National Crime Records Bureau of India reported that total of 2,964,38 Indian farmers have ended their lives since 1995 due to the inability to pay back loans, mostly taken from landlords and banks. मतलब किसान लोगों ने बैंक से या लैंडलॉर्ड, दूसरे अमीर लोगों से इतना पैसा उधार लिया कि वो लोन जो है वो लोग रिपे नहीं कर पाते. दे आर अनेबल टू रिपे द लोन्स, एंड एज अ रिजल्ट दे अंडरगोज लॉट्स ऑफ डेप्थ, है ना, पूरा डेप्थ में फॉल हो जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, इंडिया में बहुत सुसाइडल केस हो गया है किसान लोगों का. देन ये रियल चीज है, आप लोगों का बुक में दिया हुआ है अबाउट भास्कर भाई फार्म. भास्कर भाई का बहुत बड़ा खेती है. he is from Gujarat. Bhaskar Bhai is from Gujarat actually, and he is having an agricultural farm. So if you go to Bhaskar Bhai's farm, what you will find, that whole agricultural farm is littered with dead leaves, wild plants, grass everywhere, है ना. वीड्स नहीं है वो. वीड्स का मतलब क्या होता है, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन बिटवीन द मेन क्रॉप्स, जिसको हमें उखाड़ के फेंकना होता है, वो वीड्स होता है. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर प्लांट्स, सम अदर वाइल्ड प्लांट्स, सम डेड लीव्स और ग्रास एवरीवेयर. इट वाज ग्रोन इन बिटवीन द मेन क्रॉप इन भास्कर भाई's farm. And some of the tree branches seemed so dry as if eaten by insects. At places, some
plants with colorful leaves. They were croton plants, which gave him a signal when the soil became dry. Now, most of the farmers in India are like, they do not know actually how much water a plant which he is growing is needed by the plant. Okay. So what they do, these farmers, what they do, they just keep on irrigating the growing crops with lots of water. And as we human being cannot drink excess of water ना, कोई भी चीज excess हो जाने से हमारे health के लिए खराब होता है. Similarly for plants also, excess of water is not good, है ना. एक limited quantity में कम भी नहीं होना चाहिए. It should not be less also, and it should not excess the limit also. So every growing crop has its own limitation of consumption of water, which actually most of the farmers do not know. As a result, what happens? The plant, suppose if the farmer is irrigating with excess of water, the crop may get damaged. Just opposite to it, if farmers are giving less of water also to the crop, then also there is a chance that crops will die. So one farmer must know that how much water is needed by that particular crop which he is growing. तो इसके लिए भास्कर भाई was a very intelligent farmer. उन्होंने क्या किया, जहाँ पे वो खेती करते थे, एग्रीकल्चर जहाँ उनका फील्ड था, मेन क्रॉप के बीच बीच में दिस टाइप ऑफ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द क्रोटोन प्लांट वाज ग्रोन. These croton plants are very, means we have in our school KV khana pada, a wide variety of crotons everywhere, potted in the field, in the garden. आपने देखा होगा ना. आप नेक्स्ट टाइम जब स्कूल में आएंगे तो आप ये क्रोटन प्लांट थोड़ा माइंड करना, नोटिस करना. गार्डन में हो चाहे मेन आपका जो जहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस है, या आप जैसे अंदर घुसते हो मेन गेट से, सो मेनी क्रोटन प्लांट्स, दैट ऑल्सो वाइड वैरायटी, एकदम हाइब्रिड वैरायटी, बहुत अलग अलग टाइप का क्रोटन प्लांट है. आप देख लेना, शायद फोटो में देख के याद आ रहा होगा आपको. द सेम क्रोटन प्लांट इज प्लांटेड इन बिटवीन द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. तो ये क्या फायदा होता है इससे? भास्कर भाई, हाउ ही वाज कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट फार्मर, क्योंकि उसको पता है इफ ही इज ग्रोइंग द क्रोटन प्लांट इन बिटवीन द मेन क्रॉप्स, इसका पत्ता कलरफुल होता है, ठीक है ना, क्रोटन प्लांट का. अगर ये क्रोटन प्लांट बीच बीच पे ग्रो कर देगा तो क्या होगा कि क्रोटन प्लांट का रूट ज्यादा नीचे तक नहीं होता है, just towards the surface only its roots are its roots are not going deep under the soil. So as a result what happens, so suppose if you are irrigating with less of water, अगर पानी की कमी हो जाती है उस एरिया में जहाँ क्रोटन प्लांट ग्रो कर रहा है, तो क्रोटन प्लांट्स लीव्स विल स्टार्ट विदरिंग. क्रोटन प्लांट का जो लीफ है वो सूखने लग जाएगा, सूख के सिकुड़ने लग जाएगा, विदरिंग होना शुरू हो जाएगा. तो दैट इज अ काइंड ऑफ सिग्नल. तब वो सिग्नल मिलता है भास्कर भाई को, अरे क्रोटन प्लांट का जो पत्ता है वो सिकुड़ गया है, सूख गया है. दैट मीन्स now the land needs, the crops need water. Okay, signal. फिर उसके बाद he starts irrigating that crop of that particular area of the land. ठीक है ना. तो how intelligent he was not neither wasting excess of water nor he was damaging the crops by providing excess of water, है ना. कितना इंटेलिजेंटली काम किया उसने, बैलेंस्ड किया कि जब क्रोटन प्लांट का जब लीफ इंडिकेट करेगा कि थोड़ा सा सूख गया है, विदर हो गया है, तब जाके वो पानी डालेगा. सो इन दिस वे ही माने saved water also, and what to say, he could understand that now is the correct time to irrigate his crops by planting these croton plants in between the crops, है ना. ये बहुत ये सिग्नल देता है मतलब. So when the top layer of the soil becomes dry, the croton leaves bend and become limp. This signals Bhaskar Bhai which part of his farm needs to be watered. मतलब पूरे के पूरे फील्ड में, पूरा का पूरा फार्म एरिया में उसका ये क्रोटन प्लांट जगह जगह में लगाया हुआ है, और जिस एरिया का क्रोटन प्लांट थोड़ा सूखने लग जाएगा पत्ता, उस एरिया में वो पानी डालेगा.
And he was not only intelligent with the use of croton for irrigation purpose, but he was a very sensitive and intelligent also for preparing natural fertilizers himself. फर्टिलाइजर मतलब खाद होता है. ऐसे यू कैन सी इन द पिक्चर नो, भास्कर भाई कभी भी ही नेवर बॉट एनी फर्टिलाइजर फ्रॉम द मार्केट. क्योंकि आप अगर बाजार से खरीदने जाएंगे फर्टिलाइजर, दैट विल बी कंप्लीटली केमिकल, है ना. तो व्हाट ही एक्चुअली ही डू, he does actually, his soil is fertile of all the dry leaves which slowly rot and mix with it. आप थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना ये कि अगर कोई भी उसके वहां पे फार्म में घुसेगा तो देखेगा पूरा चारों तरफ ड्राई लीव्स ऑलरेडी गिरा हुआ है, वो उसको उठाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा. तो this dry leaves of the plants or trees will slowly degrade, बायोडिग्रेड हो जाएगा अपने आप और खुद ही सॉइल बन जाएगा. वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर टाइप का बन जाएगा और वो दैट विल रिटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. एक्चुअली वो उस फिनोमिनन पे उसने काम किया, ठीक है ना, उस मतलब उस बेस पे उसने काम किया. तो वो क्या कर, उसने क्या किया कि एक्चुअली he dug a part of his soil in his farm. वहां पे उसने क्या किया, जितना भी लीटर्स है, लीटर्स मीन्स सपोज द वेस्ट ऑफ प्लांट्स. व्हाट कैन बी द वेस्ट ऑफ प्लांट्स? लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, और जो भी प्लांट से जो भी गिरता है ना, जितना भी वेस्ट होता है, बहुत गिरता है ना, ऑल दिस ही कलेक्टेड एंड poured it at one side of his farmland, let it to dry. और उसके बाद उसने क्या किया, वहां पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया. हाउ दिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और वी कैन से नेचुरल फर्टिलाइजर, ऑल्सो वी कैन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या फिर कंपोस्ट. कैसे बनाया हम वो देखेंगे, ठीक है. सो व्हाट इज कंपोस्ट पीट? लेट अस नो अबाउट इट फर्स्ट. Compost pits are one of the simplest method of composting organic material for our garden. Once the site is selected for a pit, one need to dig the pit and then add the compost material such as the scraps of fruits and vegetables, grass clippings, etc. तो ये कंपोस्ट पिट क्या होता है, आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं. मे बी सम ऑफ योर पेरेंट्स आर डूइंग आल्सो एट होम, दोज आर डूइंग किचन गार्डनिंग. क्या करना होता है, आप कहीं पे कोने में गड्ढा खोदो, या फिर यू कैन टेक अ बिग साइज वुडन बॉक्स ऑल्सो. वुड, अगर मट्टी नहीं है, जमीन नहीं है, तो आप बड़ा सा वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं. उस वुडन बॉक्स में आप क्या करेंगे, यू हैव टू फिल दैट वुडन बॉक्स लिटिल बिट विथ सॉइल फर्स्ट. Soil. After the soil is kept inside, then whatever the kitchen waste you are having every day, getting every day, जैसे कि peels of vegetables and fruit, जो भी छिलका है, आलू का छिलका, वेजिटेबल का छिलका, फ्रूट का छिलका, इस टाइप का जो ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी है, या ड्राइड लीव्स फ्रॉम योर गार्डन, और जितना भी प्लांट वेस्ट, व्हाटएवर ना ऑर्गेनिक वेस्ट आर देयर, or everything you can collect and just pour it over the soil. जहाँ पे आपने डब्बा लेकर, काठ का डब्बा लेकर सॉइल रखा, सॉइल के ऊपर सारा ऑर्गेनिक वेस्ट वहां पे डाल दो, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा और एक लेयर ऑफ सॉइल आप डाल देना है. और अगर इफ पॉसिबल इन द मार्केट ऑल्सो इज अवेलेबल, मार्केट में भी आपको ये चीज अवेलेबल है. क्या चीज पता है, मैं आपको दिखा रही हूँ. कैन यू सी इन दिस पिक्चर, अ हैंड इज शोन, हैंड इट्स कैरिंग वॉर्म, रेड कलर वॉर्म, है ना, अर्थवॉर्म, रेड कलर अर्थवॉर्म दिख रहा होगा आपको. सो इस टाइप का वर्म आपको बाजार में भी खरीदने को मिलेगा, और यू कैन कलेक्ट फॉर समवेयर. और उस पिच में जो आप कंपोस्ट पिट बनाया वहां पे आप डाल दो. ओके, वहां पे डालने से क्या होगा, देन यू ट्राई टू कवर इट फॉर फ्यू डेज. when direct exposure to sunlight should not be there. Okay, keep it in mind that direct exposure to the sunlight should not be there in that pit जो आपने बनाया है, pit या फिर बॉक्स. फिर उसको कुछ दिन के बाद आप देखेंगे
with the help of this red earthworm, जिसको हम red wriggler भी बोलते हैं, the soil, the organic waste which you have mixed, no, सारा will turn into a very good quality compost, खाद, है ना, bio fertilizer बन जाएगा वो. You see, just see, we know that earthworms are the best friend of soil, or we can say earthworms are the farmer's friend. किसानों का फ्रेंड होता है ना अर्थवर्म, या फिर सॉइल का भी बेस्ट फ्रेंड होता है. क्यों? क्योंकि ये जो अर्थवर्म होता है ना, केंचुआ जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही मतलब नेचुरली सच अ गुड थिंग फॉर द सॉइल. एक तो इट विल कंटिन्यूअसली डिग द सॉइल, कंटिन्यूअसली सॉइल को डिग करता रहेगा, वो अंदर जाएगा, फिर घूम के फिर ऊपर आएगा, फिर अंदर जाएगा, घूम के आएगा, ऐसा करता रहता है ना. तो इससे क्या होता है, द सॉइल बिकम्स लूज. क्यों सॉइल का लूज होना क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट द सॉइल कैन गेट इनफ ऑफ ऑक्सीजन, और जिस सॉइल में ऑक्सीजन है, लूज है वो, दैट इज वेरी गुड क्वालिटी सॉइल, है ना. तो this earthworms, who are the best friends of farmer, they improve the quality of the soil by providing moisture. क्योंकि इनका भी ये देखो, आप जब केंचुआ का हाथ में लेंगे ना, उसी सॉइल में रहता है ये केंचुआ जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा होता है पानी में. जैसे तालाब के किनारे ये सब के एरिया में ये अर्थवर्म बहुत ज्यादा मिलता है. तो इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. जिस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है वो अच्छा होता है ना सॉइल, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. देन उसको बरोइंग करता है, खोदता रहता है, तो इससे क्या होता है, सॉइल बिकम्स लूज, पोरस एंड rich in organic content. And once the soil becomes rich in organic content, what happens? Organic content and oxygen content, the plants can grow very nicely on that particular soil. Yes, इस स्पेशलिटी है इसका, ठीक है ना. तो जब भी आप इस टाइप का कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे बॉक्स लिया, मट्टी लिया, किचन वेस्ट लिया, फिर मट्टी डाला, फिर थोड़ा सा ये इस टाइप का जो वॉर्म्स है ना, आपको बाजार में भी खरीदने को मिलता है, आपने डाल दिया, तो आफ्टर फ्यू डेज, बट यू हैव टू कवर इट नाइसली, एंड आफ्टर फ्यू डेज इट विल टर्न इनटू द बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट. वर्मी का मतलब होता है वॉर्म, और कंपोस्ट का मतलब होता है जो अभी भी अपने उसको कंपोस्ट करके वो जिस खाद को बनाया ना, फर्टिलाइजर को, सो टुगेदर इट इज वर्मी कंपोस्ट. Vermicomposting is a method of making compost with the help of red worms. We know that earthworms are called farmers' friends. Redworm is a type of earthworm. Let us understand the process of vermicomposting in detail. First, we need to dig a pit about 30 centimeters deep. If it is not possible to find a place to dig a pit, you can even use a wooden box. This box should be placed where the temperature is neither too hot nor too cold. It means the box should be placed in a shade where there is no direct sunlight or snow. Spread a net or a chicken mesh at the bottom of the box. We can also spread 1 or 2 centimeters of thick layer of sand at the bottom of the box. Now, we need to spread some vegetable waste, including peels of fruits. One can also add dried animal dung, green leaves, pieces of newspaper, husk, etc. Remember, plastic coated or shiny paper should not be used. Now, water should be sprinkled to make the layer moist. But care should be taken that we do not use excess water. Also, the layer of waste should not be pressed. In fact, it should be kept loose so that it has sufficient air and moisture. Now, our pit is ready
for the red worms to work on. We need to cover these worms either with a gunny bag or a layer of grass or an old sheet of cloth. Before covering the worms, we need to keep some food for them. The food may include fruit and vegetable peels, coffee and tea remains, and weeds. Remember that wastes that contain salt, pickles, oil, vinegar, meat, or milk should not be used as food for the worms, because these substances help in the growth of disease-causing small organisms. The red worm do not have teeth. They have a structure called a gizzard. It is advisable to add eggshells or seashells. The shells help the red worms to grind their food. Another interesting fact about a red worm is that it can eat food equal to its own weight in just one day. If proper care is taken of the worms, their number can become double in a month's time. Remember that red worms do not survive in very hot or very cold surroundings. Also, they need moisture around them. It is necessary to gently mix and move the top layer once in a few days so that it remains loose. After 4 weeks, observe the content carefully. You will find that it looks like soil. This means that the vermicompost is ready. Now, to remove the compost, we have to put some food waste in one corner of the box so that the worms move towards it. Remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for a few days. The remaining compost, which contains most of the worms, can be used to prepare more compost or share it with someone else. Once the compost is properly dried, it is ready to use. Vermicompost is an excellent manure and is also cost effective. It can be used in pots, gardens, agricultural fields, etc. See, आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि देयर हैव बीन मेनी चेंजेस ओवर द टाइम इन आवर फूड. बहुत पुराने समय में हम लोग का जो खाना था, खाने का ढंग था, आज से बहुत चेंज हो गया है ना आज के जमाने से. मे बी सम ऑफ द cuisine, some of the recipes, some of the dishes have already extinguished that which are no more in original now, है ना. ऐसा हो जाता है. जो बहुत हमारे नानी, परनानी, परदादा, परदादी जो लोग खाना बनाते थे, खाते थे, वो डिशेस आजकल ओरिजिनलिटी है ही नहीं, क्या पता, है ना. ऐसा होता है कभी कभी. So there have been many changes in our food. Okay, since earlier people used to eat chapati of different kinds of grains. Yes, आजकल हम जब हम grains आटा का रोटी खाते हैं तो हम किसका रोटी खाते हैं? गेहूं का आटा का रोटी खाते हैं. लेकिन बहुत पहले लोग हर तरह का आटा का रोटी खाते थे. All kinds of grains, ज्वार, बाजरा, wheat, every kind of, जिसको हम अभी मल्टीग्रेन्स बोलते हैं ना, तो every type of grains का वो लोग चपाती, मतलब चक्की में पीस के आटा निकाल के उसका चपाती बना के खाते थे. And but now wheat is the main ingredient of chapati. लेकिन आजकल हम चपाती रोटी के बारे में बात करते हैं तो सीधा बाजार से खरीद के लेंगे, पैकेट खोलेंगे और आटा को लेकर हम रोटी बनाएंगे. वो किसका होता है? व्हीट का होता है ना, गेहूं का होता है. तो earlier people used to buy wheat grains. The wheat grains were washed and dried in the sun. तो आजकल हमारे पास टाइम भी नहीं है, करते भी नहीं आजकल के लोग. क्या मतलब रेडीमेड पैकेट्स आर अवेलेबल ऑफ आटा ना, ग्रेन्स का या आटे का अवेलेबल है, उसको निकाला, रोटी बनाया. लेकिन बहुत पहले क्या करते थे लोग? People were not buying it from the market. Earlier people used to buy the wheat grains from the market. These grains were washed nicely, they were dried under the sun,
then these were put into the chakki and it was grinded into flour, आटा. कितना मेहनत करके रोटी बनाते थे. And आजकल तो खरीद लेते हैं आटा का पैकेट. Even most of the children of your age would not recognize a particular grain. Yes, आजकल तो ऐसा भी है कि आप लोगों की उम्र के बच्चे, कुछ बच्चे लोग कौन सा ग्रेन क्या है शायद गेहूं को भी ना पहचाने. चावल पहचान लेंगे किसी तरह से, गेहूं को भी ना पहचान, बाजरा, ज्वार, they will not be able to recognize which grain is it. Okay. And many of us now use instant food instead of traditional food. See, for preparing any kind of traditional food, we need lots of time and preparation, है ना. Traditional food का मतलब एक हमारा ट्रेडिशन में जो हमारा फूड होता है, ओरिजिनल फूड होता है ना, किसी भी स्टेट का या किसी का भी कुजिन जो होता है, उसको बनाने में बहुत टाइम और बहुत प्रिपरेशन चाहिए होता है. मे बी ड्यू टू मेनी रीजंस, मे बी लैक ऑफ टाइम एंड सम अदर रीजन, दिस प्रैक्टिस इज नॉट फॉलो. ट्रेडिशनल फूड आजकल बहुत कम खाते हैं लोग. क्या करते हैं लोग, दे पीपल आर मोर मूविंग टुवर्ड्स इंस्टेंट फूड जो इमीडिएटली बनता है. अरे बच्चे को भूख लग गया, मैगी बना दिया, खिला दिया, ऐसा भी होता है ना. So I think people will forget how to cook some of the traditional dishes in future. अभी अगर थोड़ा पता भी है लोगों को, तो in future ऐसा भी आएगा कि people will forget about क्या हमारा ओरिजिनल ट्रेडिशनल डिशेस था. ठीक है.